here it is asking how many people can speak both Hindi and English. So both Hindi and English, it means whenever it is given in the question, and it means you know that it shows intersection, right? So it means we have to find that intersection. So that the same formula you have to apply in this question. Find out in your notebook and tell me the answer, please. Yes, you have to find H intersection E. Directly you can write like number of H union E. Okay. Ma'am, 50. Number of H plus number of E. Please tell me, please. 400 minus. Ma'am, answer 50 आया है. कितने फाइंड हो रहा है? Yes, ma'am. फाइंड हो रहा है. Minus. आपको इससे माइनस करनी है. सॉरी, this minus, just 1 minute. This minus and H union E. It means you know that 250 plus 200, which is 450, minus this H union E, which is given 400. So you are getting 50. Very good. So it means 50 people, total 50 number of people who can speak both English and Hindi. Right? Now tell me, this is the next question. And firstly, it is given in a statement. So you must know that how to convert into an intersection, union, and number of whatever it is given in the question. Okay. So I am telling the question. If S and T are the two sets, here there are two different sets, S and T, and the S has 21 elements, T has 13 elements, and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T? Same formula you have to apply here also. And it is written very clearly. Tell me the answer of it. Question 4. Answer आप बताओगे. You can directly write S union T equals to number of S. Ma'am, 42 I answer. Ma'am, 64. No, Dipanshu. Ma'am, 42 I answer. But yeah, Gautam is right. Very good. कितने आते Gautam answer? 42. Exactly. 42 आपके होंगे. Number of S कितने? Ma'am, यहाँ आएगा 21. Yeah. And number of Yes. T has 32 And elements. T 32. At Ma'am, intersection 11. is given 11 elements. 11. अरे ये तो माइनस होगा. What are you getting? Ma'am, 53. This is 53 minus 11. So you are getting 42. 42. 42 मैम. मैम So it 42. means X intersection has 42 elements. आपने ये एक्सरसाइज क्यों नहीं की? मैंने आपको ये बहुत इजी फॉर्म में आपको बताया था कि how this question can be solved in the last class. But don't worry, no problem. Okay, now you have question number 5. I am telling you. This X and Y are two sets, okay, where X has 40 elements, X union Y has 60 elements, X intersection has 10 elements. How many elements does Y have? Now find this question. This is also very simple. What Yes, is given? Tell me, what is given? Ma'am, number of element is 40. Ma'am, number of X is 40. Yes. And X union Y is 60. Number of X union Y is 60. Very good. And number of X intersection Y is 10 elements. Yeah. And Ma'am, Y find करना है. Y.
Yes, yes. Find it with the same formula and tell me the answer. आप इसको mind में भी calculate कर सकते हो. So, tell me what will be the right answer? You know that whenever you will find the number of y elements, it means you can write here total कितने हैं, x intersection y कितने हैं, 60 minus this 40 plus 10. मैम 30 आंसर 30 है मैम. 30 आ रहा है आंसर. Yes. Number of y is equal to 30. 30. Okay, now the next question is, okay, fine. I hope you are understanding. This is very simple. दिखने में जितने ये hard लग रहे हैं उतनी hard है नहीं actually, right? So, मैम समझ गए. now हो जाएगा. Yes. okay, question number 6, 7. I hope आप 6, 7, 8 कर लोगे. तो Dipanshu, Yes ma'am. yeah, tomorrow. I mean, by today evening, I'll. मैम बस एक ही फॉर्मूला पे पुट करना है. Yes, the same formula you have to apply in this exercise. So आज आप मेरे को अगर evening तक अगर मुझे अपनी homework submit कर देते that will be better. Okay ma'am. By today evening, this exercise at least आप मुझे करके send it करोगे. Okay. Now the next chapter I am telling you. Next chapter is relation and function. This chapter is gonna complete it. आपके पूरी complete हो चुकी है. सारे exercise discuss कर लिए हैं. मैंने आपको बता दी आपकी चैप्टर सेट्स आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है. तो अगर कोई किसी भी एक्सरसाइज में अगर अभी भी डाउट होंगे तो हम उस डाउट सेशन को भी लेंगे एक क्लास. बट आप उसको कम्प्लीटली जितने भी एक्सरसाइज आप उसको फिर से रिवाइज करोगे प्रॉपरली. एंड इफ यू विल गेट एनी डाउट देयर then you can ask me anytime. So this is now the another one chapter 2, and this is related to chapter first. So chapter first में हमने सारे कर लिए. तो chapter आपको second समझ में तभी आएगा और chapter first को अच्छे से समझे हुए रहोगे. Now the chapter second is relation and functions, and the first line which is given in your that page of this chapter, mathematics is an indispensable instrument of all. नहीं आ रही है. मैम का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ऐसे कट कट के आ रही है. Okay, wait, just 1 minute. Okay, this is the second chapter. Are you getting now clearly? हमें थोड़ा सही आ रहा है. This is the second chapter, which is related to chapter first. And what is your chapter second chapter name? Relations and functions. Okay, what this I mean जितने भी जो sets थे उसकी relation क्या थी and उसके functions क्या हैं? How does it work? So it is actually a statement which is written on that page, which I am discussing, and by which this is just the statement that you must know that. So mathematics is the indispensable instrument मैम की of all वॉइस नहीं आ रही theoretical है. research. Hello, what are you getting? Dipanshu? हेलो गौतम. Are you getting now? Dipanshu and Gautam, just say yes or no. Are you getting now clearly? मैम क्लियर नहीं आ रहा है. Okay, now are you getting my voice clear? Yes ma'am. Fine. So again, I'm telling this what I am sharing with you. Second chapter, okay? I was discussing the second chapter, and your chapter name is relations and functions. So this relation and functions chapter related to chapter first. Set से related है ये. उसकी relation क्या है, उसके functions क्या होंगे, कैसे ये work करता है, and how this is related to our day-to-day life. So that
introduction, firstly we will discuss of this chapter, and then we will do the question or some examples related to it. So the statement which is written on the page on that chapter, so mathematics is the indispensable instrument. जो आपकी मैथमेटिक्स है वो इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च, जितने भी फिजिकल रिसर्च होते हैं उसकी इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है. इसका मीन हो गया इट इज इसेंशियल सोल्यूशन ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च. जितने भी फिजिकल रिसर्च होते हैं उन सबका एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो सोल्यूशन है मैथमेटिक्स. सो दैट्स व्हाई वी आर learning this subject mathematics relation and functions basically. And much of the mathematics is about finding a pattern. हमने सेट्स में इसके पहले पढ़ा था. So like link between quantities that change. जितने भी quantities होते हैं you know that क्वांटिटी होता क्या है, यू नो क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हो एंड क्वालिटी को मेजर नहीं करते आप. सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पैटर्न. ऐसे बहुत सारे पैटर्न दिए हुए होते हैं आपको, लाइक डिफरेंट पैटर्न. पैटर्न इन द सेंस कुछ पैटर्न बनाओ लाइक दिस. ओके, so this kind of pattern sometimes it is given, right? So we come across in our day-to-day life so many patterns that characterize relations. जो relation को characterize करता है, such as brother and sister. Suppose ऐसे बहुत सारे different pattern होंगे. मुझे brother and sister को categorize करना है, तो हम ऐसा कुछ different pattern बना सकते हैं. अगर मैं brother को बनाना like brother and sister को बनाना like sister, ऐसे भी सो अगर मुझे ब्रदर एंड सिस्टर को कैटेगराइज करना है तो फिर उसके लिए पैटर्न शो करने पड़ेंगे. फादर एंड सन को कैटेगराइज करना हो या फिर टीचर स्टूडेंट को कैटेगराइज करना हो. सो इन numbers, in mathematics also we come across many relations. So ये तो relation ये तो आपकी खुद के relations हैं, like father, mother, sister, brother. So these are the relations you know that in your family. But in mathematics we also come across many relations such as number. हम numbers से बहुत सारे numbers होते हैं. Like if I say m is less than the number n, अगर मैं ये बोलती हूँ कि m is less than number n, या फिर इसके मैं सेम में बोल सकती हूँ 8 is less than the number 6, sorry 8 is less than the number 10. So obviously 8 क्या है, 10 से lesser number है, right? So if या फिर आप इसकी जगह पे कोई दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो, लाइक लाइन L is parallel to लाइन M. बहुत सारे रिलेशन, यहाँ पे सिंपली मैं कोई रिलेशन बता रही हूँ. रिलेशन का मीन आप कंपेयर करके बता सकते हो या फिर दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन कर सकते हो. सो दीज आर द रिलेशंस. एंड हियर इफ आई से लाइक कोई भी लाइन अगर पैरेलल है दूसरी लाइन के, सो सेट आपने सेट को इससे पहले पढ़ा है. सो सेट ए सबसेट ऑफ बी आपने ये भी देखा होगा. सो इन ऑल दीज we notice that a relation involves a pair of objects. जब भी आप कोई किसी relation, when we are talking about any relations, then that in that all cases we are getting, so relation involves pair of objects. Relation क्या involve होते हैं? Pair of objects in certain order. किसी भी ऑर्डर में होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. तो आपने इस ये यहाँ पर जब मैं कंपेयर कर रही हूँ या फिर उसकी सबसेट बता रही हूँ, सो व्हाट वी आर टेकिंग pair of objects, we are taking pair of number, pair of alphabet, we are taking. So in this chapter we will learn how to link pair of objects. मेरी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है कि कैसे किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को लिंक करनी है. ओके, फ्रॉम टू सेट्स. हमने सेट्स कराया तो किसी भी दो सेट को कैसे लिंक करनी है. एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन, एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स in pair. So here I am taking, and apart from this we will also learn about the special relation which will qualify to be functions. And दोनों के functions different होंगे. हो सकता है A की functions different हो, B की functions different हो. So that also we will discuss in this chapter. So the concept of functions is very important in mathematics because it captures the idea of mathematically precise corresponding between the quantity with the other. Actually we are comparing any two objects in the form of quantity. So that's why this chapter
This relation and function structures are very important. Okay, I'm taking one example. Suppose, like, set E, okay, set E is of two colors. Okay, अगर मैंने set E को two colors show किया है and B is a set of three objects. Okay, I'm writing the set of this set A like red, blue, and B को हमने show करा है B, C, S. In three objects you can take here. So I'm taking set A, which has two colors, red and blue, and B has another one element which is B, C, and S. So these are the three objects of the set B. So where B, C and S, अगर मैं B, C and S की बात करूँ जो आपकी set B में दी हुई है, what it represents here? It represents a particular bag, coat and shirt. Three objects कुछ भी हो सकते हैं. B for bag, C for आप कुछ भी coat ले सकते हो, or S for shirts, suppose. Okay, so these are the three objects and he has two different colors. So how many pair of colored objects can be made from these two sets? अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन करूँ, how many pair of colored objects, कितने pair of colored objects होंगे that can be made from these two sets, जो two sets से मिलकर बने होते हैं. Okay, so in a अगर इस order में मैं लिखूँ, then like मैंने इस pattern को follow किया है, and this is your red and blue. Okay, this is your shirt, coat, and your bag. Okay, now I'm asking, so where you will proceed this pattern? It is a very orderly manner. आप इसको एक order में भी इसको show कर सकते हो, and we can see that there will be total 6 distinct pair. टोटल कितने पेयर बनेंगे ये मैं आपको शो करती हूँ. टोटल 6 distinct pair बनेंगे. How? Actually, I'm just making the pair firstly. So you can write red. आप इस red के साथ B को ले सकते हो, right? Red coat भी हो सकते हैं and red is shirt भी हो सकते हैं, right? हमने पहले red से compare किया. Yes. Similarly, you can write like Blue. Blue B. bag. Blue C. This is your blue blue C, Blue S. and blue blue shirt. आपकी रेड बैग कोट शर्ट्स भी हो सकती है एंड आपकी बैग कोट शर्ट्स रेड ब्लू भी हो सकती है. तो हमने जितने भी पेयर बन सकते हैं इसके पॉसिबल पेयर्स हमने बनाए. सो टोटल दे आर 6 total or distinct pair which we are getting here. So what we are considering, what I have asked from you, like how many pair of total colored objects that can be made from these two sets. So you can see here total 6 pairs can be made. Is it clear? Yes, yes ma'am. ma'am. आज बंद कर रखा है. Okay, just sorry. This P and Q I am taking two non-empty sets and we have to find the Cartesian product of P into Q. Okay, so how we can find? So this Cartesian product P into Q is the set of all ordered of elements from P and Q. जितने भी P and Q के जितने भी elements होंगे, that will be the total pair of this
Cartesian product P into Q. So you can write like PQ. P belongs to P and here Q belongs to Q. जितने भी एलिमेंट्स Q के होंगे वो सारे Q से बिलोंग करने चाहिए एंड जितने भी P के एलिमेंट होंगे सारे P से बिलोंग करने चाहिए. So if either P or Q is a null set, अगर P और Q में से भी कोई हमारा अगर null set होता है then P into Q will also be empty set. तो यहाँ पे जब भी आप अगर ये दो हमारे null set हो और empty set, okay, अगर ये दो हमारे null set और empty set होते हैं तो इसकी जो पेयर फाइंड होगी वो भी क्या होगी, empty होंगे. Again, I am telling, if either P or Q, if P is empty set or Q is empty set, then P into, when you will find P into Q, it will be also the empty set. तो ये भी क्या होंगे, empty set होंगे. Okay, so you can write here, you can write P into Q is 5. So what is your answer? आपके आंसर क्या होंगे, 5 होंगे. Okay, so here when you are finding this first question and here you have to find like E into B. Same example I am taking. If you have to find Cartesian product of A and B, then what is the answer? Tell me. Ma'am, red and B. Total जो आपके होंगे total set Yes, ma'am. completely A ये and जो B होंगे. Okay, आप इसको शो कर सकते हो because these are not empty set. ये तो empty set नहीं है तो obviously this is your answer. But अगर ये दोनों अगर empty होते हैं तो आपकी P and Q की जो इसकी जो product होगी वो भी क्या होगी, empty होगी. Okay. Yes, ma'am. Another example I am taking like I am taking GL, MP and K. Here DL, what it represents? DL represents Delhi, MP represents Madhya Pradesh, and this KA represents Karnataka. Okay. Now, set of B I am taking 0.1. Sorry. One. This is 0, 1, 0, 2, 0, 3. Okay. These represents code for the license plate of vehicles issued by Delhi, MP, and Karnataka. So these are the license 01, 02, and 03. These are the code of this license of Delhi, MP, and Karnataka. Fine. So they are two different sets. So you will make the pattern. अगर आप इसको pattern में बनाते हो तो pattern में कैसे बनाओगे आप? There are total 3 states. So you can write DL, MP, and Karnataka. Fine. Now, the codes are 0, 1. given. So you can write like 03. So 03 कोड 02. L के भी हो सकते हैं, MP के भी हो सकते हैं, पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, and वो कर्नाटका के भी हो सकते हैं. Similarly, when you will go to the next code, then 02 code is for, it may be for Delhi, MP, and for Karnataka. Right? जैसे आपने 01 ये भी आपके हो सकते हैं, स्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं. तो जितनी भी हमने पेयर में पहले हमने इसको पैटर्न के थ्रू इसको डिफाइन किया. नाउ बाय पैटर्न आल्सो you can find out how many total such pairs will be made. आप मुझे पैटर्न के थ्रू बता सकते हो. इससे पहले मैंने मैं आपको 9. पैटर्न बताया था. कितने होंगे टोटल? 9. Yes, obviously because 3 Delhi के होंगे, 3 MP के होंगे and 3 कर्नाटका के होंगे. तो total 3 is 9. It means it can be easily seen that through this pattern, अगर आप इसको total अगर इन दोनों की product आप नहीं भी find करते, then also you can get total 9 such pair will be made, right? So total 9 such pair in this Cartesian product. So इसकी Cartesian product कितनी होगी? Total 9 pairs होगी. Since there are 3 elements, तो इसके elements कितने हैं? 3 elements given in set A. And in set B also it has 3 elements. So this gives us 9 possible codes. So इससे कितने possible codes हो सकते हैं? 9 possible codes होंगे. And it is
is also noted that there the order in which these elements are paired is Christian. अगर आप इसको order make करोगे तो obviously ये पूरे Christian होंगे. For example, अगर मैं code Delhi की बात करूँ तो code Delhi का क्या लिखूँ? This, okay. And if I am writing 01 DL, okay. So now you say the code DL01, is it same as 01 DL? Yes, ma'am. No, this is not same as code 01 and DL. Because you have to write in order. What I am saying, you have to write in order. जैसे आप order में आप DL01 लिया तो आपके next flow में DL02, DL03 इस order में होने चाहिए. तो आपको सारे इस order में show करने हैं. अगर इस order में आप show करोगे तो इसको भी इस order में show करोगे. तो ये different होंगे, ये different होंगे. Okay. So this is another one example. Or we can take, I'm taking another one example like A equals to E1, E2. Okay. These are two sets I'm taking, and B equals to B1, B2, B3, B4. Now you say what is the Cartesian product of this A into B? How many such pairs can we? Please tell me कितने होंगे? कोई भी pairs possible हो सकते हैं. See, by pattern you can say this is your B4, B3, B2, B1, fine. And this is your E1, E2. 8 होंगे. Total कितने होंगे? Tell me, Gautam. 8 होंगे. This is very simple. Tell me. I mean total जितने भी होंगे 8.